Welcome students again. So in the second part of lesson Federalism, we have read about what? We have read about two questions. First, what makes India a federal country? And second, how federalism is practiced in India. Okay? Those were 5 marks individual questions. Now this is the last part or last module of this chapter. Heading is decentralization. ठीक है, तो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन और ये टॉपिक क्यों पढ़ना है यहां पे हमें. ठीक है, सी वी आर रीडिंग फेडरलिज्म. व्हाट वाज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म वाज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या था? वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉस फॉर द होल कंट्री. ठीक है, वन इज स्टेट गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉस फॉर इट्स होल स्टेट. ठीक है, in India there is a third level also. The power is not only divided between two, that is center and state. The power is taken from central government and state governments, and some of the power is given to the local government also. And this process of division of power, okay, it is called as decentralization. Or you can say that, one line I can quote it, decentralization is one step more extension of federalism. That's why this topic is being mentioned in this chapter. Okay, ठीक है. So now we'll understand it. Definition it's clear. ठीक है, वैसे मैं मीनिंग आपको और बता देता हूं. Decentralization, center means केंद्र होता है, केंद्र. तो when the power is in the hands of few persons, ठीक है, that is called as centralization. And when the power is divided up till many level, D मतलब removal होता है. Decentralization means the power is taken from the central government and the state government and divided to the local government. This process is called as decentralization. Here it is the definition. When the power is taken away from the central and state government and given to the local government, it is called as decentralization. Okay, so you understood why this topic is in this chapter. Okay, because it is related to federalism only. Now, second, need. So why? What is the need? Why two level of government were there now? Central government was there, state government was there. Now what is the need of local government? ठीक है, so I am explaining you this thing by an example. Suppose करो by chance in the school president sir is there, management members is there. ठीक है, that is first level. They control the whole school. They make policies, arrange funds for the whole school, direct the whole school. Then below them, who is there? Principal ma'am, and then vice principal ma'am is there. लेकिन प्रिंसिपल मैम एंड वाइस प्रिंसिपल मैम कैन नॉट अलोन कंट्रोल द होल स्कूल. सो क्लास टीचर्स आर देयर एंड सब्जेक्ट टीचर्स आर देयर. सो सी द पावर इज बीइंग डिवाइडेड टू द वेरियस लेवल. व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू कंसल्ट एवरी स्टूडेंट्स, in order to make every student participate, in order to make every student grow. Same in the country. Central government is there, state government is there, but in a state many districts are there, many towns are there, many cities are there. ठीक है, तो state minister, that is chief minister, he cannot go everywhere. ठीक है, he cannot understand the problem. कहीं पानी की कमी है, somewhere electricity is there less, somewhere more rain is there. ठीक है, so everything can't be handled by chief minister and his cabinet of minister. That's why we need local government, because local people understand local problems very well. Local people can take decision for the solution of local problems. They know themselves very well. They know their area very well. जैसे हिंदी में one word is there, पार्षद होते हैं आपके, है ना, वार्ड होते हैं, उनमें पार्षद होते हैं. तो they look after your area. ठीक है, they look after your locality. They, if suppose you are having the problem of water shortage in summer, you go to them. If suppose you are having the problem of improper roads, है ना, or broken roads, you go to him. They then consult the municipal department. So see, local people understand local problems very well. That's why first central government was there, then state, and that's why we need local government. So this is 3-mark question. What is the need or importance of decentralization? जरूरत क्या है? See, the basic idea behind decentralization is that a large number of problems and issues are there which are best settled at the local level only. बहुत सारे issues they are not understood by state level persons or central level persons. They are being understood by local persons only.
That's why. First point. Second, people also have better knowledge of problem of their localities and they also have better ideas where to spend money. क्या करना है, where in our locality more problem is of education or more problem is of roads or infrastructure. What problems are there? So local people understand all these things very well, and local people can spend the money and run the government or run the area or develop the area very effectively. That's why we need decentralization. Third point, beside at the local level, it is possible for the people to take part directly in decision making. If people will take part, this is only democracy, because democracy is a government of the people, for the people and by the people. So we have to inculcate or we have to make people participate. So by making local government or by making decentralization, we are indirectly inviting all the persons to come and participate in decision making and in administration. So these points, 3 points, reveal what is the need or what is the importance of decentralization. Okay, understood this? Now, third, steps taken in 1992 to ensure decentralization. See, 5 points are mentioned here. This is 5 mark question. Okay, so okay, we understood decentralization is very much necessary. It is very much critical. But for decentralization, not only making of local government is suitable. Okay, beside that, we have to make some changes even in our constitution to make it mandatory, ताकि local government सही तरीके से चल सके. The local government must get funds also. So for that, what steps are being taken? So in 1992, the constitution was amended and these 5 steps were taken in order to make local government more powerful or local government works effectively. That's why. So what were these 5 steps? First, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections for local bodies. ठीक है, लोकल बॉडीज में क्या क्या आएगा? लोकल बॉडीज में आती है पंचायत, लोकल बॉडीज में आती है म्युनिसिपैलिटीज, इन हिंदी वी कॉल्ड इट एज नगर पालिका, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिंदी वी कॉल्ड एज नगर निगम. जैसे वी लिव इन दमू, तो अपन वी आर हैविंग नगर पालिका. ठीक है, द विलेजर्स दे आर हैविंग ग्राम पंचायत. तो ये पहला स्टेप लिया गया कि नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कंपल्सरी टू होल्ड इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन होगा तो पंच सरपंच चुने जाएंगे, पार्षद चुने जाएंगे, एंड दे विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज फॉर SCs, STs एंड OBCs. सी 33% reservation is there for SC, ST, OBC, so that every people can come forward and every people can take part in the development of the area, town or city, whatever it is. So second step, this was taken. Third, at least 1/3 of the positions are reserved for women in order to make women participate. Okay, so that the women social status is being uplifted. Okay, that's why 1/3 seats means 33% approx seats are being reserved for women in the local bodies, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, or whether it is ग्राम पंचायत. Third step. Fourth, an independent institution called State Election Commission formed to conduct local elections. जैसे at the India level, when Lok Sabha election takes place, then Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are being conducted by Election Commission of India. Election Commission जारी करती है instructions. ठीक है, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, आचार संहिता. आचार संहिता मीन्स उस टाइम पीरियड के बाद फिर नो पॉलिटिकल पार्टी कैन डू इट्स प्रीचिंग, अपना प्रचार प्रसार वो लोग नहीं कर सकते. उसके बाद सारे के सारे चीजें जो होती हैं प्रचार प्रसार वो बंद हो जाता है. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बिकम स्ट्रिक्ट, ऐसा होता है. तो दीज ऑल आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन किसके लिए है? लोकसभा और राज्यसभा के लिए. बट यहां पे लोकल बॉडीज के लिए एक अलग से कमीशन सेटअप की गई, एंड दैट कमीशन वाज स्टेट इलेक्शन कमीशन, ताकि वो ध्यान रखेगी कि वेदर द इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडीज आर हेल्ड compulsory or not, whether the rules and regulations are being followed or not while elections. If partiality is there, they will take strict actions. Okay, see, so an independent institution called State Election Commission, this is formed to conduct local elections. This was the fourth step. The last step, state governments are instructed to share power and revenues with the local government. See, local government require money na for the construction of road, water supply, electricity, or solving other local problems. So from where they will get revenue, from where they will get money. So state government are being instructed
कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कमाई का कुछ पोर्शन शेयर करना पड़ेगा किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, सो दैट लोकल गवर्नमेंट विल बी एबल टू रन देयर एरिया प्रॉपरली एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया. सो दीज वर द 5 steps which steps were being taken in order to make local government very effective, and these steps were taken in year 1992. So this was 5-mark question. Understood this? Now, fourth topic, structure of local government. ठीक है, तो structure of local government में basically the local government is being divided into 2 parts. First is rural area. Rural area is also called पंचायती राज सिस्टम, बिकॉज इन रूरल एरियाज, गांव में पंचायत होती हैं, एंड अर्बन एरियाज. ठीक है, नाउ यू सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम डाउन. ठीक है, यू सी फ्रॉम डाउन, दिस वन, यहां से मैंने एरो बनाया है, फ्रॉम डाउन टू अप. ओके, ये हायरार्की लेवल है. ठीक है, तो लोकल एरिया में सबसे पहले क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है. व्हाट इज ग्राम पंचायत? दिस आई हैव रिटन हियर. ग्राम पंचायत इज अ काउंसिल ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स. जैसे हमारे यहाँ पार्षद होते हैं, तो गांव में वार्ड मेंबर्स होते हैं. ठीक है, ऑफन कॉल्ड पंच, उनको हम बोलते हैं क्या, पंच बोलते हैं. और एक प्रेसिडेंट होता है, एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच. तो यू माइट हैव सीन इन टेलीविजन, ओल्ड मूवीज आर देयर, तो वहां पे पेड़ के नीचे सारे पंच बैठते हैं. ठीक है, दे टेक डिसीजंस, है ना, और बाकी जितने सारे लोग बैठते हैं, द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज, दैट एडल्ट पॉपुलेशन, जो मीटिंग होती है, मीटिंग, दैट इज कॉल्ड ग्राम सभा. सभा मतलब मीटिंग. तो सी सेकेंड, ग्राम सभा. पंचायत हु वर्क्स अंडर सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत, दे वर्क अंडर सुपरविजन, निगरानी में काम करती हैं. किसकी? ग्राम सभा की. ऑल द वोटर्स आर इट्स मेंबर्स, एंड ग्राम सभा में जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स हो जाते हैं. देन इट मीट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर and approve the budget. Budget मतलब कितना पैसा they have to invest for making of तालाब्स. ठीक है ना, कितना पैसा they have to invest for making of schools, for making of roads, कच्चा रोड्स, पक्का रोड्स. तो ये बजट अप्रूव करने का काम कौन करता है? ग्राम सभा. दिस also carry 3 marks. ग्राम पंचायत carry 3 marks with its functions. ग्राम सभा carry 3 marks with its functions. This you can read more in the NCERT book. Okay, ठीक है. तो now वी आर स्टडिंग ग्राम पंचायत और पंचायती राज सिस्टम. तो 2-3 ग्राम पंचायत मिलकर बनाती है पंचायत समिति. ठीक है, अब पंचायत समिति इज ऑल्सो नोन बाय 2 अदर, पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. पंचायत समिति इज नोन बाय 2 अदर नेम्स, ब्लॉक और मंडल. तो सबसे पहले 2-3 ग्राम पंचायत आर देयर, दे ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म व्हाट, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल. देन 2-3 पंचायत समिति और मोर पंचायत समिति ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म जिला परिषद. जिला परिषद इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट परिषद. ठीक है, तो 2-3 पंचायत समिति ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट. रूरल, ठीक है, गांव की. ओके, नाउ अब वी विल टॉक अबाउट अर्बन एरियाज. अर्बन मतलब क्या होता है? थोड़ा शहर, टाउन टाइप के एरियाज. तो इन दैट द लोकल गवर्नमेंट हैज 2 बॉडीज. एक होते हैं छोटे टाउन और एक होती है बिग सिटीज. In small towns like we are in Damo, ठीक है, so in our town there is municipalities, means नगर पालिका है. ठीक है, और in big towns जैसे मुंबई, इंदौर, भोपाल, यहाँ पे नगर पालिका नहीं, यहाँ नगर निगम होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. So urban is being split into 2 types. First is municipalities and second is municipal corporation. Municipalities में लिखा हुआ है it is for towns और municipal corporation में it is for big cities. ठीक है, नेक्स्ट, यहां का जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, 1 मार्क क्वेश्चन. तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज हेड. म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है ही इज कॉल्ड एज मेयर. तो इंदौर के मेयर हैं, भोपाल के मेयर हैं एंड अदर्स. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, 5 मार्क क्वेश्चन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट. अलोन दिस वन ऑल्सो कैन कम इन 5 मार्क्स. क्या अगर पूछ लें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, एंड अलोन दिस कैन कम इन 3 मार्क्स. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ लास्ट टॉपिक. तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया हमने जो पावर डिवाइड की, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, मींस लिमिटेशन है, कमियां हैं. वेदर दिस डिसेंट्रलाइजेशन इज इफेक्टिव और नॉट, वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. तो लिमिटेशंस, कमियां. ठीक है, सी एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ
डिसेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट एडवांटेज लिखा है मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी। इससे डेमोक्रेसी डीपन हुई है। आई हैव टोल्ड ना कि पीपल टेकिंग पार्ट डायरेक्टली, ठीक है, तो पीपल टेकिंग पार्ट, दिस इज ओनली डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल आर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दे दिया गया यहां पे, जो मैंडेटरी कर दिया गया था, इससे डेमोक्रेसी और डीपन हुई है और गहराई है, ठीक है। दिस इज एडवांटेजेस फॉर अस। देन इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन। हियर वी हैव स्टडीड कि 1/3 सीट्स आर बीइंग रिजर्व फॉर वुमेन। सो इन दिस वे द this was the advantage of decentralization कि first it has deepened democracy, ठीक है, and second it has increased the women's participation or women's representation, ठीक है। okay, now last limitation में क्या लिखा है, ग्राम सभाs are not held regularly। अभी we read ग्राम सभा ना, ग्राम सभा has to meet twice or thrice in a year, ठीक है, and they approve the annual budget, they look for the problems, they solve for the problems of the village areas, ठीक है। so they are not meeting regularly। अब twice or thrice भी नहीं अगर मीट कर पा रहे हैं, so how they will solve the problem, how they will approve annual budget, सब तो से वैसे काम हो जाएगा। so this is the limitation, that's why decentralization is not effective, much effective, we need to work on it, ठीक है। next, most states haven't transferred powers and resources। अभी यहाँ बोला था ना फिफ्थ पॉइंट में कि स्टेट्स गवर्नमेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू शेयर पावर एंड रिसोर्सेज। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट को पावर शेयर करना चाहिए, तब तो वो काम कर पाएंगे। उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं होगी, सो हाउ दे विल वर्क, ठीक है। बट द स्टेट्स आर इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्शन तो दी गई है, बट स्टेट्स ऐसा कर नहीं रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू रिटेन पावर विद देमसेल्फ, दे वांट टू रिमेन पावरफुल। तो अपनी पावर डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो ना रिसोर्स दे रहे हैं ना पावर दे रहे हैं। सो हाउ डिसेंट्रलाइजेशन कैन मेक इफेक्टिव? So these were the advantages and limitation. So this is how the second chapter of your democratic politics book is completed. That was federalism. Thank you.